जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? So once again, I'm at SSC-II 10th Biology, and this is Coordination and Control, Chapter number 12, and this is an extension of my last lecture, Human Eye, and I'm starting from the quick review from the last lecture, name different external parts of hair. I'm hoping that you must answer this question and you are now able to answer all these questions. What are the functions of the tears? So name the outermost layer of the eye and why choroid gives dark color to eye. Which part of eye is muscular among the following? Lens, pupil, iris, and cornea. What kind of changes will undergo in eye while night vision? So these are the questions from the last lecture, and I'm hoping that you can answer these questions. So if you found any difficulty, you can write me in the comments. You can ask me at any time. So let's start with the diagram of the eye. This is the internal structure of eye. That the yellow colored structure is outermost layer of the eye. This is called as, let me take the pointer, this one, right? This is the sclera, and that blue, that sclera is from the front, if you can know. So the front portion of the eye is basically transparent and it is called pupil, and the next layer is choroid, which is dark blue colored choroid, and the extension of the choroid is iris. Iris is actually the muscular structure, and iris, in between the iris there is a space that called as pupil. Right before the pupil is the lens, and right before the behind, sorry, before behind the pupil is lens, and behind the lens is fovea, the portion of the retina, innermost sensitive layer of eye. So eye has three layers: sclera, choroid, and retina. And this is the space which is called as vitreous chamber, and that is the space which is called as aqueous chamber. Vitreous chamber is filled with vitreous humor. Aqueous chamber is filled with aqueous humor. These are eyelash. These are the eyelids, and these are the eyelashes. This is cornea. So I have repeat all of the labelings for you for the recall of the lecture. This is blind spot, and this is basically the nerve cord, optic nerve. um, Blind spot, it is why it's called as blind spot, I'm going to discuss in this lecture. And this is fovea, these two structures we will discuss in today's lecture. So let's start the today's lecture. Human eye internal structure. Okay, so I've shown you the ciliary muscles नहीं दिखाई मैंने आपको इसमें. These are the ciliary muscles, and that yellow orange, that orange part is the suspensory ligament. These are the ciliary muscles: suspensory ligament, lens, suspensory ligament, ciliary muscle. So they all form a combination. Means suspensory ligament and the ciliary muscles are responsible to keep the lens in its position, right? So we are discussing this today. This is actually the vision of the distant and the near object. यानी कि दूर का object और करीब का object देखना, how it is possible with the same lens, right? Lens is a non-living part in our eye, and how it works while vision of distant object and the near object. So these are the ciliary muscles, and these are the suspensory ligaments. Okay, as far as near vision is concerned, so you all know convex lens is going to help you in viewing the near object. So convex lens will become more convex, right? Convex lens will become more convex while visualizing the near object, and it is bounded with the suspensory and the ciliary muscles. Ciliary muscles get contracted in order to make the lens more contracted and the lens more convex. Our eye will, ciliary muscles will contract it, और क्या होता है, हमारे lens will become more convex, or you can say that it becomes thick. And in case of and the suspensory ligament in this case will become loose, right? ये loose से हो जाते हैं, free से लटक से जाते हैं, ठीक है, slack से हो जाते हैं. So ciliary muscles contract. The contraction of the ciliary muscles result in the convection, making the lens more convex, or you can say making it thick. And the reverse is in the case of seeing the distant object. Let ciliary muscles get relaxed and suspensory ligament get more tensed.
राइट। वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि लूज हो जाते हैं, यहाँ पे ये टेंस्ड हो जाते हैं, और टेंस्ड होने की वजह से ये खींच पड़ती है इनमें। जब ये खींचते हैं, इनके खींचने से लेंस विल बिकम इलोंगेटेड, थोड़ा सा लंबा हो जाता है या लेस कन्वेक्स हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट योर लेंस विल बिकम लेस कन्वेक्स और थिन। ठीक है, अब ये दो बातें याद रखनी है। अगर आपने करीब का ऑब्जेक्ट देखना है तो योर लेंस विल बिकम मोर कन्वेक्स एंड थिक, एंड अगर आपने दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो योर लेंस विल बिकम थिन एंड लेस कन्वेक्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। बिहाइंड आयरिस देयर इज अ कन्वेक्स लेंस विच फोकसेस लाइट ऑन रेटिना। आयरिस के पीछे लेंस है जो कि फोकस करता है, ठीक है, रेटिना पे लेंस पे इमेज बनाता है। लेंस इज अटैच्ड टू द सिलियरी मसल्स ऑफ आई वाया अ रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। जो लेंस है वो सिलियरी मसल से आंख के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दरमियान में सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी हैं। टू क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट फार अवे, कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, सो सिलियरी मसल्स रिलैक्स एंड लेंस बिकम्स लेस कन्वेक्स। अगर अपने दूर का देखना है तो सिलियरी मसल्स को रिलैक्स होना पड़ेगा, वो जितने रिलैक्स होकर पड़े रहेंगे लेंस उतना फैलेगा, ठीक है ना, लंबाई में फैलने की जगह मिलेगी ना, वो जितने सिलियरी मसल्स रिलैक्सड होंगे तो। और सस्पेंसरी लिगामेंट इस वजह से थोड़े खिंच जाएंगे, उनके खिंचने से और सिलियरी मसल्स के रिलैक्सड होने से लेंस विल बिकम थिन एंड लेस कन्वेक्स। When ciliary muscles contract, लेंस बिकम्स मोर कन्वेक्स एंड राउंड। और अगर आपने सिलेरी मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो इकट्ठे हो गए ना करीब के अंदर की तरफ जरा झुके दोनों तरफ से, तो कन्वेक्स लेंस जो है वो ज़्यादा राउंड और थिक हो जाता है। ओके, एक मैंने की बनाई है छोटी सी, ये अपनी बुक पे आप लिख लो। सो दैट सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड थिक लेंस, ये तो हो गया कब, टू सी द नियर ऑब्जेक्ट, राइट। सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग इन द थिक लेंस, while in that case suspensory ligaments will become loosen, while distant vision tensed suspensory ligaments are necessary for making the lens thin and ciliary muscles get relaxed. This is the case of the relaxed ciliary muscles and this is the case of the contracted ciliary muscles. See, तो एक और इमेज है बहुत ज़बरदस्त, मुझे पसंद आई ये फिगर, दैट दिस इज गोइंग टू शो यू द लूज सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होते हैं। ये लूज है और ये टेंस्ड है। जब भी सस्पेंसरी में लिगामेंट टेंस्ड होंगे तो लेंस भी थिक खिंच जाएगा, समझ रहे हो ना। धागा खींच रहा है तो उसके आगे बंधी हुई चीज़ भी खींच रही है दोनों साइड्स पर, और अगर वो नहीं खींच रहा तो वो भी अपनी जगह पे, ऊपर से सिलियरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो उसको और अंदर की तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हाउ वी कैन सी अ नियर एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये सारी इसकी ना वर्डिंग लिखी हुई है, इस फिगर को जरा देखना ध्यान से, कैसे ये लेंस आपका ऐसा हो जाता है, लेंस छोटा और गोल हो गया, ये वाले सिलेरी सस्पेंसरी लिगामेंट लाइंस देखो लूजन सी हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टेड सिलेरी मसल्स हैं। इन दैट केस ये देखो जरा बड़ा हो गया, और ये क्या हो रहा है, लेंस जो है आपका सॉरी सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड, ये देखो इसकी ये स्ट्रेच हो गई हैं, ये सस्पेंसरी है और ये फैल गया है, लंबा हो गया है। ये हम कह रहे हैं इन केस ऑफ फार अवे विजन। सो इस फिगर पे तो फिर देख लेना। ओके जी, सो दैट वाज द हाउ वी कैन सी अ नियर एंड द फार ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस द इनर लेयर ऑफ द आई, दैट इज रेटिना। रेटिना में अब क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इनर लेयर विच इज सेंसरी फोटो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है, इनकी जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं वो सेल्स हमारी आंख में प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। इट कंटेन्स द फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रोड्स एंड कॉन्स एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। इनकी ये सारी लेयर बड़ी थिक होती है। आई मीन एक तो रेटिना है ना, रेटिना के ऊपर अटैच्ड है रॉड्स एंड कॉन्स, फिर उनके आगे ढेर सारे न्यूरॉन्स का ढेर लगा हुआ है जो रॉड से और कॉन से निकल निकल के मैसेजेस ले लेके इस ऑप्टिक नर्व की तरफ जा रहे हैं, और ये यहाँ से लेकर दीज नर्व्स विल टेक द मैसेज टू द ब्रेन कि आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। नाउ लुक एट द रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स आर द सेंसिटिव टू डिम लाइट, व्हेन जब रात का वक्त होता है तो आर रॉड्स आर गेटिंग इन एक्टिव एंड वी यूज आर रॉड्स ड्यूरिंग नाइट, while cones are sensitive to bright light and to distinguish different colors। तो कॉन्स हमारी ब्राइट शार्प इमेज जो भी बनता है, आप कोई देखा आपने कोई बहुत कलरफुल सी चीज़ देखी, रेनबो फॉर एग्जांपल देखी, तो इट मीन्स कि उसका इमेज आपके फोविया में बना होगा विच इज़ रिच इन कॉन्स। ओके, अब इस फिगर में ज़रा देखते हैं ये क्या फिगर है। ये जो ग्रीन ग्रीन से आपको दिख रहे हैं ये है जी रॉड्स, रॉड सेल्स हैं, ये जो इनका ये वाला रीजन होता है, तो यहाँ पे पिगमेंट ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है, ये पिगमेंट ग्रैनुअल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, और ये इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियस भी है, मतलब कंप्लीट सेल है ना ये भी। सो यहाँ पे इनका पिगमेंट एपिथेलियम है जहाँ पे इसके अंदर मेलानिन
प्रोडक्शन हो रही है, इनके अंदर अपनी प्रोडक्शन हो रही है, जो जिसके इर्द गिर्द ये वाला सेल होगा। तो ये रॉड्स हैं, ये वाले रॉड्स हैं, ये वाली कॉन्स हैं, ठीक है ना। दो तरह के सेंसिटिव सेल्स हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी लेबलिंग देखने के लिए। हाँ, आप हल्का सा इमेज अपनी कॉपी पर ज़रूर बना लो, टू कीप दिस इन माइंड दैट दिस इज अ रॉड शेप एंड दिस इज कॉन शेप, राइट। तो देयर आर टू। ये भी एक और फिगर नजर आ रही है साथ आपको, ये रॉड्स एंड कॉन्स। ये देखो रेटिना का यहाँ से कट करके पीस ये निकाला है। अब ये रॉड्स एंड कॉन्स भी हैं और ये सारे न्यूरॉन्स भी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैसेजेस ले लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। ओके, वो दिखाती हूँ ना, ये रहे आपके न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स हैं जो इनसे मैसेज लेके जा रहे हैं कि आपने रात के वक्त क्या देखा, दिन के वक्त क्या देखा, कौन सा कलर देखा, कौन सा कलर नहीं देखा। तो ये सब चीज़ें हमारे रॉड्स और कॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें दिखाए रात के वक्त, दिन के वक्त और कलर्स भी। ना ह्यूमन आई इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, रेटिना हैज़ 2 पॉइंट्स। रेटिना के अंदर दो बहुत मेजर पॉइंट्स हैं, वन इज़ फोविया, अदर इज़ ऑप्टिक डिस्क। फिगर में देखो, ये चीज़ है फोविया और ये चीज़ है ऑप्टिक डिस्क। फोविया वो पार्ट है जहाँ पे मैक्सिमम कॉन्स आर प्रेजेंट, राइट। Cones means that you are going to see the image with all its details, sharpness, and the colors, right? Fovea is responsible for the bright vision, right? क्योंकि उसके ऊपर cones present हैं. While optic disc has no rods and no cones, no photosensitive cells are present, and the blind spot. What does it mean? It means that these are the blind spots, and they are not going to make any image on this part, and hence this part is called as blind spot और द ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ पे कुछ होना भी तो नहीं चाहिए था ना, यहाँ से तो मैसेजेस ने ब्रेन में जाना है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता। दिस इज द पैसेज वे गोइंग आउट ऑफ द आई, राइट। So this is called as optic disc. Now, fovea is a dip in retina directly opposite to the lens. हाँ, this is very important to note that whenever you are going to draw the eye, please make that lens, and right after the lens there should be fovea, right। यहाँ पे इसके पीछे optic disc ना बना देना, ठीक है। Optic disc should be away from that fovea, sorry। Fovea is actually the part of the retina which should be right behind the lens, okay। Fovea contains so many cones, and this is the um, blind spot or the optic nerve, right, that is far away from the fovea. Directly opposite to the lens and densely packed with the cone cells. मैंने बताया कि fovea, whenever the image is going to make form on the fovea, it means it is sharp, it is bright, we can see all of the details of the image. It is largely responsible for color vision and sharpness. And the optic disc is a point on retina where the optic nerve enters the retina. There are no rods and cones at this point. That is why it is also referred as the blind spot. Okay, so this is once again the eye, because मैं अगले 2 points और मज़ीद discuss करना चाह रही हूँ. We have completed with the sclera, with the choroid, with the retina, and we have also discussed the fovea and the blind disc, blind spot or the disc. We have discussed all these terms. Now this time I'm going to discuss this is vitreous chamber, and that blue part is aqueous chamber. This is vitreous chamber, this is aqueous chamber. Vitreous chamber is filled with the liquid, and that is called as vitreous humor, and humor means liquid, and aqueous humor is filled in the aqueous chamber, right. This liquid is important for maintaining the shape of the eye in that part of the eye between the iris and the cornea. This is responsible between the iris and the cornea, or ये जो liquid है, this is also responsible for the bulging out of the cornea as well, right, and it is also provide the nourishment to the cornea. Then this is the lens. Right after the lens, we have another body called vitreous chamber or the vitreous body. It is filled with the vitreous humor, and that liquid is filled with a gel. That part of the eye is filled with a jelly-like fluid. और ये भी हमारी आँख को नरिशमेंट देती है, प्रोटेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा लाइट रेज रिफ्रैक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Above all, it maintains the shape of the eye as well. Do you know what refraction is? Refraction आपको पता है ना कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जाती है तो उसका पाथवे चेंज हो जाता है. तो सेम इज द केस विद दीज मीडिया. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन ऑन द रेटिना. ठीक हो गया. Then is the chambers को देख लेते हैं. The iris divides the cavity of eye into two chambers. The anterior chamber is in front, and the posterior chamber is between iris and retina. Anterior chamber contains a clear fluid, aqueous humor, and posterior chamber contains a jelly-like fluid called vitreous humor, maintains the shape and suspends the delicate lens. ठीक है, ये इनके काम थे. Now rhodopsin.
अब रोडॉप्सिन क्या चीज़ है? रोडॉप्सिन आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा था विटामिन ए वाले टॉपिक में, ठीक है ना। रोडॉप्सिन फॉर्म करता था, विटामिन ए जरूरी था, पता नहीं आपको याद है या नहीं। well, this cell is rod cell, this is a cone, right? Rod cells have rhodopsins, are produced rhodopsins, while cone cells are produced iodopsins, हम थोड़ी देर में देखेंगे। Rods contain a pigment called rhodopsin. ठीक है ना? When light falls on rhodopsin, it breaks before generating a nerve impulse. In the absence of light, the breakdown products are again converted into rhodopsin. थोड़ी देर में समझ में आएगी ये बात। Now look at this equation, right? ये अपनी किताब पे लिख लेंगे तो रिवाइज करना आसान हो जाएगा। Now this is opsin, a colored protein, a black and white. I mean the protein which is present in the rods. ठीक है, opsin नाम है उसका। That protein in the presence of vitamin A, this protein is going to convert a compound called rhodopsin. Right? Opsins plus vitamin A is going to produce rhodopsin. Rhodopsin, you know, आपने देखा भी, it's very important for the image formation. This rhodopsin in the presence of light will convert into opsin and vitamin A, and night vision will occur and give, this is important, responsible for the night vision। ठीक है, दोबारा देखते हैं टेक्स्ट में लिखा था, when light falls on rhodopsin, तो वो टूट जाता है मॉलिक्यूल और नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, उसकी ब्रेक होने से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और मैसेज जाता है कि आपने फलां और कोई बंदा आमने सामने से आ रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आपको वो नज़र आ रहा है, वो बंदा नजर आया लेकिन आपसे कपड़ों का कलर नहीं देख सकते, बिकॉज नाइट विजन में रॉड्स इंपॉर्टेंट हैं और रॉड्स कलर विजन नहीं दे सकते, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द ब्रेक डाउन, अब क्या हुआ, वो तो टूट गया ना, लेकिन जैसे ही लाइट खत्म होगी तो फिर क्या होगा कि रोडॉप्सिन वापस जुड़ जाएगा, और जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, रोडॉप्सिन प्लस लाइट, ऑप्सिन एंड विटामिन ए और नाइट विजन रात को देखा, लेकिन अगर नहीं देख रहे तो वापस रोडॉप्सिन बन जाएगा, ये वाला सारा रिएक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। बॉडी सिंथेसाइजेस रोडॉप्सिन फ्रॉम विटामिन ए एंड दैट इज व्हाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज द पुअर नाइट विजन। अगर विटामिन ए आप वो टाइम से नहीं ले रहे हो, आप मेल न्यूट्रिटिव हो या कोई बच्चा मेल न्यूट्रिटिव है, इट मीन्स कि वो सफ़र करेगा विद द डिजीज कॉल्ड for called night blindness, right? This problem is called as night blindness, but vitamin A is not the only cause of the night blindness, okay, but it could be a major reason, in fact, in the growing age of the kids. Now, insufficient vitamin A, insufficient rhodopsin, lack of functioning of the rods, and brain doesn't receive the signals and night blindness, ठीक है ना। अगर नहीं होगा विटामिन ए तो रोडॉप्सिन ही नहीं बन रहा, जब रोडॉप्सिन नहीं है तो रॉड्स एक्टिवेट ही नहीं हो रहे, और फिर वो आप रिजल्टिंग इन द नाइट ब्लाइंडनेस। मैं को दिखाती हूँ कैसा इमेज नजर आता है जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अच्छा, अभी इस इमेज में देखो, ये नॉर्मल विजन है। हम रातों को जब सफ़र करते हैं, कभी जा रहे होते हैं कहीं, तो हम देखते हैं ना गाड़ियों की बहुत सी लाइट्स हमें नज़र आ रही होती हैं, ये सब लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, लेकिन दिस विजन देखो सिर्फ ये पार्ट नज़र आया है जिनको नाइट ब्लाइंडनेस है, उन्हें ये सब कुछ और डार्क नज़र आ रहा है। एक और इमेज देखो, ये वाला, ये थोड़ा ये बड़े में ना से क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, इसमें देखो, अब ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, रोड, ये हमें आम नज़र आता है ना रात के वक्त, लेकिन इसमें इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा जो भी नाइट ब्लाइंडनेस का पेशेंट है। सेम इज़ द केस विद दिस। अभी सारे इमेजेस रात के वक्त के लिए हुए ना, तो इसलिए इनमें लाइट कम है, so we can see, but we can see in the moonlight, मतलब कुछ ना कुछ एक्सटेंट है तो we can see obviously, but what about the patient of a night blindness, they cannot see anything regarding the because their rods are not activated in the night, so this is what is called as night blindness. Then iodopsin. Iodopsins are present in these cells and they are going to produce the iodopsins. तीन तरह के हैं. Cones also contains a pigment called iodopsin. There are three main types of cones and each has a specific iodopsin. Each can recognize three primary colors: red, blue, green, RGB. RGB पता है ना आपको, primary colors हैं, जो primary colors RGB, यही तीन हैं हमारी आंख में, और यही तीनों की कॉम्बिनेशन से हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं। Acha, now can you see that blue dots and red dots in between the blue dots? So this is 12. This is another kind of 12 in the blue grayish dot and orange or red shades of the 12, right? So if you are colorblind, you cannot see these numbers inside these dots, but if you have a normal vision, then you can easily see them, the number between present in these dots. So if any type of cones is not working,
तो थ्री टाइप्स के कौन से ना, कोई एक वर्क नहीं करेगा, बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट कलर. सच पर्सन इज ऑल्सो नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स एज वेल. अक्सर लोगों को अपने कलर्स में शायद झगड़ते हुए भी देखा हो. दिस इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस विच इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम. कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक प्रॉब्लम है. नाउ लुक एट दीज कलर्स. दिस इज द रिजल्ट ऑफ द नॉर्मल विजन. अगर आपको ये सब कलर्स नजर आ रहे हैं, ब्लू ब्राइट अलग नजर आ रहा है, ग्रीन अलग नजर आ रहा है, रेड के शेड्स अलग नजर आ रहे हैं, then it means you are not color blindness. मगर अगर ये चीज़ है, दिस इज रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इसमें वो दो कलर्स नजर नहीं आ रहे, तो इन सब के शेड्स देखो डिफरेंट हो गए. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. अगर किसी को तीनों कलर्स की ब्लाइंडनेस हो जाए, रेड ग्रीन ब्लू, तो वो कंप्लीट, वो प्रॉपर कलर ब्लाइंड में कहलाता है बंदा. So this is what is color blindness, and this there is a test as well for you. अगर आपको इसमें से नंबर नज़र आ रहे हैं, मैंने साइड पे लिखे हुए भी हैं, अगर आप नहीं देख पा रहे तो साइड पे वो नंबर्स लिखे हुए हैं, 7, 13, 16, 8, 12 and 9. So that is all about the eye, and in fact everything about eye. And if you know anything regarding the topic, you can ask me. अपना बहुत सारा ख्याल रखो. फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ. अल्लाह हाफिज़.